very active in the party. I believe he's still in the party. जी बिल्कुल. Dr. Alvi, President Dr. Alvi. The President, जी. Akbar S. Babar. जी, they are very much. Okay. जी. Also, I have attached a copy of the interim constitution from page 36 onwards to demonstrate the level of involvement. Page, what is the page? 36. Okay, fine. What? This is a letterhead written to No, why are you showing its to relevance? demonstrate that जो फॉर्मेशन है, मतलब नाम का फाउंडिंग मेंबर नहीं हूँ, एक्टिवली मिलके हामिद खान साहब के साथ और दीगर लोगों के साथ आइन साजी में एक्टिव ना हूँ, और उसकी ये एक्नॉलेजमेंट लेटर है. जो मौजूदा आइन है इससे फर्क है जी, बहुत इसके बाद काफी आइन बदलता रहा है, और अब ये इशू जनाब के सामने नहीं आया, इलेक्शन कमीशन के सामने आया था. देवर अपेरेंटली मोर देन वन वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एक 2019 की जिसके ऊपर इलेक्शन होना था, एक वो अमेंडेड वर्जन जो कहा गया अंसारी साहब थे वापस ले ली, अमेंडमेंट हुई, और फिर तो देयर हैव बीन मल्टीपल वर्जन्स. बट शुरू में पैनल था या शुरू में पैनल नहीं था जी, पहले ये बात की है जी. आई डू नॉट हैव the track line of the constitution amendments from day one, but I believe the panel system has been introduced later. और कोई बात जी. नंबर 3 पे सर एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है, पेज 58 जी. ये जिस सिंबल का जिक्र हो रहा है, ये खत में इमरान खान साहब चेयरमैन ने मुझे अकबर एस बाबर को ऑथराइज किया था कि ये सिंबल की दरखास्त. I can't see your name. Read it. जी, इसमें आप this letter is written to the Secretary Election Commission, application for allotment of symbol. इसमें authorization है, my apologies जी, इमरान खान साहब का सिग्नेचर है, और इसमें सिंबल के लिए जो मुख्तलिफ बैट टाइगर सारा है कि ये हम अप्लाई कर रहे हैं, और इसके आगे मैंने आपका नाम कहाँ जी, मैं वो एनेक्स में है, वो मैं दिखा रहा हूँ पेज 61 पर. Mr. Akbar S. Babar, Central Information Secretary, Pakistan Tehreek-e-Insaf, is hereby authorized to submit the required documents of Pakistan Tehreek-e-Insaf to the Election Commission. So ये जो application भी थी, मुझे ऑथराइज. पार्टी कब बनी, कौन से साल में? पार्टी तो जी मिड 90s में बनी. ये आइन जो है 99 में आया, और ये सिंबल ये 2002 में क्यों आ रहा है? पहले क्या सिंबल था? I'll have to get instruction on that. ठीक है, तो ये 61 हो गया. और कोई बात जी. और इस पे मैंने फिर एक सैंपल लगाया अनदर फाउंडिंग मेंबर को पेज 63 पे, कि जब शो कॉज देना होता है तो किस तरह शो कॉज दिया जाता है, पेज 63 पे. चलिए, खैर वो तो अलग बात है. और उससे जो किसको शो कॉज दिया है? दिस शो कॉज वाज टू मिस्टर अहमद खान. क्यों? He said something that the secretary at that time did not like. He perhaps spoke truth to power, as he always does. पहला पैराग्राफ क्या है? It has been noted by the undersigned that the chairman of the party, Mr. Imran Khan, that you have repeatedly in the print and electronic media spoken against the maligned, defamed the party without any justification and on the basis of fake and false allegations which amount to malafide. Whereas you are hereby charged. इसमें जो मैं जो ये कब की बात है? This is December 1, 2019. इसमें जो it was reported that Khan Sahab had responded very strongly to the show cause notice. Or on page 65, I just want to read one line. This is 64 से पढ़ लेना. Will not quit party under any मैं वो उसी का जो मेन कोट था वो कर रहा था. So दुख की ये बात है कि a different measure, a different standard, a different argument is being presented for a co-founder. This is very painful to observe. इसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? 65 ये let me make it loud and clear that I will not quit the party under any circumstances. So why is there a different measure of the application, the interpretation of the law for Akbar S. Babar? He has made it clear over the years he is not going to quit the party. If you want to turn him out, follow the law, give a
show cause notice, let him defend it, turn him out. He is bound, like I शो कॉज नोटिस का क्या बना? have जो public knowledge है जी खान साहब मेरे आगे बढ़े जी। उसके अलावा 2 अजाफी कागजात जो मैंने जमा कराए हैं ये वो जजमेंट्स हैं, एक फैसला इलेक्शन कमीशन का और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें मेरा मेंबरशिप का क्वेश्चन एज अ फैक्ट एस्टैब्लिश हो गया कि मैं मेंबर हूं, पार्टी इसको कॉन्ट्रोवर्ट नहीं कर सकी। इस पेज पे जी पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट 68 से जनाब, सिर्फ वो जुमला बता दें। जी मैं उस पर, इसमें आप रिस्पोंडेंट थे? जी ये वो मैटर है फॉरेन फंडिंग का, जब मैंने कंप्लेंट उसमें दायर की थी और उससे जो लिटिगेशन एमिनेट हुई वहां पर भी ये कहा कि ये मेंबर नहीं है, इसकी शिकायत मत वसूल करो। तो ये we went to the whole membership story multiple times and here Where is it held that you remember? जी in paragraph 10 in view of the above it is confirmed that Paragraph 10 पेज बताइए। page 71 तो ये 10 से शुरू होता है जी, 11 में भी इसका डिस्कशन है और 13 पे आ जाता हूँ, 73 पे टू कट इट शॉर्ट, paragraph 13 on page 73. In view of the above referred section 7, the petitioner has not produced any single document which would come under the definition of a show cause for suspension or expulsion of the membership of the political party, although there is no doubt that respondent number 2 was relieved from his duties of Central Information Secretary and he himself acknowledged the same through his email dated 11/9/17. But for expulsion or cancellation of membership, it requires show cause notice which was never been issued in case to respondent number 2. ये जजमेंट की तारीख क्या है? ये फैसले की तारीख है जनाब 18/7/2018, which is evident on page 68. इसकी उन्होंने अपील की? There was an ICA and I believe that इस पॉइंट पे अपील नहीं। this question has never, this determination has never been overturned to date. There have been at least 11 rounds of litigation before the Islamabad High Court since. Why? For what? On every point at the ECP, कभी jurisdiction नहीं है, कभी मैं member नहीं हूँ, कभी उनका ये इख्तियार नहीं है, कभी उनका वो इख्तियार नहीं है, रिट होती रही है। If my lord wishes, मैं वो list of litigation भी फाइल कर सकता हूँ, मेरे पास वो handy होगा। At the end of the day उस litigation का बना क्या? उसका बना ये कि स्क्रूटनी अलाउ की गई, स्क्रूटनी हुई, फाइंडिंग ऑफ फैक्ट हुई कि सोर्सेज प्रोहिबिटेड सोर्सेज से क्या बना? शो कॉज नोटिस पे फिर रुक गए जी। स्टे ऑर्डर चल रहा है। I have not been associated in the show cause proceedings. I have आपके client हैं, उनको पता होगा। नहीं, he has not been associated because now the argument. Client, where is he? हमें डायरेक्ट ना एड्रेस करें, आप पूछ लें उनसे। जी पूछ लें। मैं गुजारिश पूछ तो लेना। आपको तो शो कॉज की जरूरत नहीं, आपने हिस्सा नहीं लिया। नहीं उसमें जरा ये बता दीजिए कि जो फॉरेन फंडिंग का फैसला था अगस्त में, 5 अगस्त को शो कॉज दिया, उसके बाद PTI ने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो लार्जर बेंच बना 2 फरवरी 2023 में डिसमिस हो गया एंड दैट इज वेयर इट स्टैंड्स। वो ये कह रहे हैं जी कि शो कॉज के बाद दे चैलेंज इट बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें एक लार्जर बेंच बना, बट वो भी उनकी दरखास्त डिसमिस हुई वहां पर। तो अब इनके मुताबिक कोई अमर माने नहीं है। बट आई हम्बली सबमिट। शुरू कब हुई ये कंप्लेंट आपकी? November 2014. First hearing, I believe, took place in January. It was filed in November. The first hearing took place in January 2015, and then successively chalti rahi. And then the round of litigation began later in that year, and it has been going on and on, sir, since then. जी सर, ये पहला पॉइंट है of the documents. और कोई बात? जी सर, ग्राउंड्स बताए गए कि अभी कहा कि जी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जवाब दे दिया है कि क्यों अकबर बाबर को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया। कम से कम 4 रीजन बताए गए, इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि नॉट अ मेंबर एक दफा कहा गया, फिर कहा गया डिड नॉट पे 50,000 रुपीज, फिर कहा गया ही केम लेट, फिर कहा गया ही डिड नॉट कम विद अ पैनल। नहीं देखिए, वो जरा कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशंस ले रहे हैं ना जी। एक तरह तो उन्होंने लिख के तो कहा है कि आप मेंबर नहीं है जी, तो जब मेंबर नहीं है तो फिर उनको भगाएं, मतलब वो फिर नॉमिनेशन पेपर का सवाल ही नहीं पैदा होता है।
सो बिल्कुल वो फिर ये कहते मतलब बड़े रिलक्टेंटली हामिद खान साहब तो कंसीडर्ड वेरी फ्रैंकली दैट ही इज द फाउंडिंग मेंबर। Yes. उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता इसके बाद क्या हुआ। यस। अब पेज 220 अगर देखिए रेट में कहते हैं ना कम टू कोर्ट विद क्लीन हैंड्स, उन्होंने कहा कि जी आप लोग मेंबर्स नहीं हैं, ये गलत ठीक नहीं है। है। अब बेशक अपोज करें आपकी पिटिशन, वो तो हक है सबका, मगर फैक्चुअली तो बताएं ना सही बात। बिल्कुल। फिर आप यस बिल्कुल आप कहें कि जी मेंबर हैं मगर इनको कोई इख्तियार नहीं है, जो भी बात करें तो ये जरा सा हमें ये जरा फर्क बताइए ना। जी बिल्कुल। तो ये कोई पेश किए सबूत? नहीं सर, नॉट टू माय नॉलेज। तो आपसे इनको गिला है तो बाकी जो आए 5-6 लोग, इनसे क्या मसला है? जिस तरह उन्होंने कहा सर, माय रिकलेक्शन इज उन्होंने ये बयान शायद नहीं किया है, जब इलेक्शन कमीशन में बहस हो रही थी तो उन्होंने अपने मेंबरशिप के कोई फॉर्म्स या इन्होंने कुछ चीजें उधर शो की थी। सो इफ माय लॉर्ड विल आस्क देम दे विल बी एबल टू शो द कोर्ट के क्या एविडेंस थी ऑफ देयर मेंबरशिप। अच्छा, और कोई बात? जी पेज 231 पर जो मेरी कंप्लेंट है इलेक्शन कमीशन को, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि दिसंबर 1 को 4:45 पर मैं गया। This is well within the time of the nomination papers. So I do not know where they page 231, paragraph 3, on December 1, 2023, around 4:45 p.m. in the afternoon, I along with a delegation of PTI members visited PTI Central Secretariat located in G8 sector of Islamabad. Now, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड तलब किया है जनाब ने, उसमें वीडियो एविडेंस है, उसमें वाज़ेह है कि वो विद इन टाइम देयर वाज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल देयर। तो शायद खुद कह रहे हैं, मान भी रहे हैं कि आप गए थे, बट अभी आई मिसहर्ड कि उन्होंने कहा कि जी वक्त के बाद आए हैं। मुझे तो वक्त के अंदर आए हैं, यहाँ लिखा हुआ है, इसको चैलेंज पहले नहीं किया, आज बिलेटेड चैलेंज है। वो इतनी बारीक चीजों में हम नहीं जाएंगे। जी बेहतर। अगली गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ सर कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो पहले करा। तो ये कह रहे हैं कि चले भाई वो इलेक्शन गलत हो गया मगर मुझसे सिंबल तो ना लें। मैं उस पे क्या आप कहते हैं? जी 215 को अगर इजाजत दे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसकी करेक्ट रीडिंग प्रेजेंट नहीं की गई। करेक्ट रीडिंग कुछ यूं बनती है, notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under the act shall be eligible to obtain an election symbol. एलिजिबिलिटी से मैं रुकता हूँ, यहाँ पर एलिजिबिलिटी मेजर है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रांट ऑफ सिंबल नहीं है। जी कौन से पेज में? सर मैं सेक्शन 215 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट पढ़ रहा हूँ। 215। अच्छा, जो ये कह रहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी टू ऑब्टेन अ सिंबल का स्टैंडर्ड है। आर्ग्यू ये किया जा रहा है कि ग्रांट हो गया। आपका पॉइंट क्या है? कि अगर ये दस्तावेजात जो कि कानून कहता है कि आपने सर्टिफिकेट्स देने हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे टू ऑब्टेन ए सिंबल, बट यू डू नॉट ऑटोमेटिकली गेट अ सिंबल ग्रांटेड टू यू। और यहाँ पर जो पॉइंट मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि व्हेन द मेजर ऑफ एलिजिबिलिटी इज ब्रॉट इनटू ए क्राइटेरिया देन समवन हैज टू डिटरमिन whether or not you are eligible. If I am 5 years old and wants to run a 100-meter Olympics race, somebody will determine whether I am eligible to do that. तो ये इसी में सर एक और गुजारिश है कि रूल 15 का हवाला दिया गया, जो इलेक्शन रूल्स के इन्होंने अपना पीटीआई के अपने इलेक्शन रूल्स हैं, उसमें भी छोड़ें, दूसरा पॉइंट बताएं। उसमें बड़ा लिखा आफ्टर का लफ्ज है, उसमें वो जनाब नोट कर लें, आफ्टर he announces। ये एक्चुअली क्योंकि इस पे बहुत इन्होंने लेबर किया पॉइंट, आई विल नॉट टेक मोर देन 30 seconds। The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel or chairman, as the case may be, at the notified polling day at the polling venue after taking objections. They have not showed what objections, if any. They even asked anybody क्या कोई objection तो नहीं है election में, और from the members, or votes present at the venue. ये किधर से आप पढ़ रही हैं? ये मैं पेज 100 of the PTI rules. Where will we find them on our books? जी पेज 100 of the petition, page 100. जी जी ये शुरू होते हैं पेज 98 पे टाइटल, अब 100 पे क्या है? एंड 115 रूल 15 जो जनाब के सामने पढ़ा गया।
The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel नंबर क्या पढ़ रहे हैं? 15 as the case may be at the notified polling day at the polling venue after taking objections from the member or voters present at the venue. So they have not discharged the burden of after. नहीं, ये तो फिर उनका जवाब बनता है। वो हमने जब उनसे पूछा कि जब अगर सारे अनअपोज्ड आ गए तो फिर आप जाके मीटिंग क्यों की वहाँ चमकनी में, तो वो तो इस पे रिलाई कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट करता। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिलाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये उनके हक में बात नहीं कर रहा है अभिषेक। ये बेसिकली अनअपोज्ड का जो फॉर्मूला या मॉडल या मेथोडोलॉजी यहाँ प्रेजेंट की गई है, ये इन रूल्स की भी मंशा मुझे तो नजर नहीं आती, बट दैट इज फॉर माय लॉर्ड्स टू कंसिडर के क्या है। अगला जो मैं गुजारिश करना क्वेश्चन कि इन्होंने इलेक्शन पिटीशन जो पेशावर हाई कोर्ट में फाइल की उसमें ये उन्होंने डिस्क्लोज किया कि लाहौर में भी मैंने पिटीशन फाइल की। वो एक्चुअली वो फिर उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको दे दें और चेक तो कर लें। बदर जस्ट मेंशन कि मैंने चेक किया, सर्टिफिकेट में उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, उनका फर्स्ट पिटीशन है, बट नहीं वो पिटीशन पेशावर में फर्स्ट है। उन्होंने जिक्र किया कि भाई लाहौर में भी एक पिटीशन है, बेशक उसकी वजह बता दें कि जी दूसरा मसला है, इधर दूसरा मसला है। नहीं जी ऐसा नहीं। जो मैं वो जरा ऑन अ लाइटर नोट था। आई होप यू डोंट माइंड। नॉट एट ऑल। आई होप ही डजंट माइंड। I would not be able to read all these documents without them. नहीं कह रहे हैं, बट एक्चुअली पैरा 20 में जिक्र किया है। सर्टिफिकेट में नहीं है, 20 सर्टिफिकेट में पैराग्राफ 20 में 20 में बात है। एक सेकेंड, नहीं पेज बता दें पिटीशन का। पेज 38 कैंसिलेशन मेंबरशिप पैराग्राफ 20 में पढ़ें। That however no written order was provided for longer than expected, therefore the petitioners filed several applications for copy of the order, saying that an order had already been announced and written order may be passed. The applications were filed on so-and-so, but no avail. Finally, an order was announced by ECP on 23/11/23, completely changing its earlier order announced on so-and-so, whereby ECP declared that the petitioner had failed to hold intra-party elections in accordance with published certificate of the PTI on website of the Election Commission of Pakistan in terms of section 2093 of the Elections Act 2070 without any delay. During the course of arguments, we have been informed that subject matter of instant petition dispute over the intra-party elections of the Pakistan Tehreek-e-Insaf conducted on 2/12/23 has already been heard in detail by the Election Commission of Pakistan, and judgment has been reserved due to restraining orders of this court dated 11/12/23 and 15/12/23 passed in the instant petition. Being so, notwithstanding the arguments so advanced and hard-pressed by the learned counsel for the parties at the bar, keeping in view the peculiar facts and circumstances of the case, and in the larger interest of justice, rather than passing in any order or observation qua publication of the certificate of the PTI on the website and its publication in the official gazette under the provisions of ये स्टेक ऑर्डर दिखाई 11, 12 और 15, 12 ये क्या है? जी मैं लगाया इसमें मैं देखता हूँ सर इसमें। और ये पिटीशन भी बता दें किस पेज पे है? ये पिटीशन वाज 585 सर। जो नहीं इसका ये जो 11 इसमें are you sure? अच्छा ये स्टे बता दें, ये स्टे कैसा है? ये मैं वो देख रहा हूँ, मुझे सर वो 11 और 15 का ऑर्डर मखदूम साहब है कहीं या नहीं है? Please see page 602. The last line on the page refers to orders, interim orders passed on 11th and 15th of December 2023. Are they on the record? My lord, they are not. Do you have them? My lord, I'll just check. Okay. ये इस पिटीशन में ने क्या मांगा था? प्रेयर क्या थी इसमें? जी मैं इसका प्रेयर है जनाब। On page 5 starts with 590
hold and declare that delay on part of the ECP to publish the certificate of PTI on the website of ECP, especially in view of upcoming general elections. Again, it's missing language, sir. B, direct the Election Commission of Pakistan to forthwith publish the certificate of PTI on website of ECP as required by section 2093 in the interest of justice. Hold and declare that proceedings by ECP in this regard are without jurisdiction, without lawful authority and illegal, and no action can be taken by ECP. Any other point? Actually, the point that I wanted to make with reference to the Constitution was, my lord, that if Your Honor, when you use the word Constitution, just clarify. PTI or Pakistan? PTI Constitution. My apologies. Page 171. यहाँ पर जनाब देखेंगे कि जो शिक है 1.3.7, this is second from the bottom. SG, which is the Secretary General, shall represent party in all judicial and legal matters. So while the questions were being asked by the court, I observed that the Peshawar petition was not authorized by the Secretary General, but the Chairman. So this was just a point I wanted to bring to the court's notice. Umar Ayub Khan is a petitioner. In Lahore, in Peshawar. He's a petitioner, but he's one of the petitioners here. But the authority that is appended, अगर उसको मैं उसका सफा भी बताता हूँ, वो that has been not given by the Secretary General himself, but by the Chairman. But like I said, sorry. Apologies. I think there's a last 2 points, sir. प्राइवेट क्लब नहीं है, अभी हमने सुना है कि पॉलिटिकल भी है, इट्स अ मोर. और आखिरी सेक्शन 66 का हवाला देना चाहता हूं, बिकॉज 104 सेक्शन ऑफ द इलेक्शंस एक्ट का जिक्र किया गया. सेक्शन 66 इज क्वाइट इंस्ट्रक्टिव टू दैट डिबेट. आई जस्ट वांट टू आइडेंटिफाई दैट. 66 says a contesting candidate before seeking allotment of a prescribed symbol shall file a declaration before the returning officer about his affiliation with a particular political party, if any, along with a certificate from the political party showing that he is the party's candidate from the constituency. So ये जो तासुर दिया गया कि symbol, ये जो आपने list देनी है या affiliation associate करनी है, symbol मिलने से पहले करनी है, तो कोई अमर माने नहीं है किसी भी कैंडिडेट को अपने कागज जमा करा के इलेक्शन लड़ने के लिए. ये जो 1666 is it attending to general elections or intra-party elections? So I am now coming to the general elections. नहीं, ये 66 जो पढ़ रहे हैं, ये general elections. I have not understood the point. Sorry. It was argued that the election commission perhaps wants to deprive the party from the symbol and in the process disenfranchise lakhs of people and also its members. So यहाँ पर वाजे है कि कानून की मंशा ये है कि अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो जब अपने कागज जमा कराएगा तो उसने एक अपना एफिलिएशन लेटर और अपनी कागज प्रायर टू अलॉटमेंट ऑफ सिंबल करना है. तो जो एप्रीहेंशन है कि जी सिंबल नहीं मिला हम इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, ऐसा कोई नहीं है. पार्टी के बेस के ऊपर पार्टी ये कह सकती है जी कि मैं इस पार्टी का नुमाइंदगी से ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ. सिंबल की डिबेट बाद में शुरू होती है. ठीक, जिस तरह मैंने कल गुजारिश की थी 3 कॉन्सिक्वेंसेस थे, मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करता. That is it, my lord. I have nothing further to add unless there is a question that I need to respond to. What is war of attrition? You should ask a question. I've asked a question. On the, I cannot answer that. लेकिन मैं एक और सवाल में जब Badr was trying to mention, जब ये कहा गया कि जिस तरह इलेक्शन पिटिशंस के हवाले से बड़ी वाजे प्रोविजंस है कानून में कि कौन चीज कब होनी है, क्या प्रोसीजर है, सेक्शन 3(1) और सेक्शन 4(3) का जिक्र नहीं किया गया 3(1) ऑफ द इलेक्शंस एक्ट, जो ये कहता है कि जहां पर, ये मैं पढ़ देता हूं सर, ये नए पॉइंट्स हैं तो हम जरा पढ़ तो लेना जी. ये सिर्फ वजाहत में करना चाहता हूं क्योंकि ये पॉइंट रेज हुआ. सेक्शन 31 नो सर, सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 of the Elections Act 2017. In the performance of its functions and duties and exercise of its powers, the Commission shall regulate its own procedure.
सो अगर कोई ऐसी बात थी जो कह रहे हैं तो मेरी कंप्लेंट गई इंट्रा पार्टी के हवाले से। खैर ये तो ओके। और इसी तरह सेक्शन 4 में जनाब सब सेक्शन 3 जो है इट फॉलोज द कंप्लीट जस्टिस पावर वेस्टिंग इन द कमीशन अंडर सब सेक्शन 1 एंड इट सेज, मैं 1 भी पढ़ देता हूँ, द कमीशन शैल हैव द पावर टू इशू सच डायरेक्शंस और ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज इंक्लूडिंग एन ऑर्डर फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर बिफोर इट। बाकी अटेंडेंस। और इसी तरह से सब सेक्शन 3, एनीथिंग रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट for which no provision or no sufficient provision exists shall be done by such authority and in such manner as the commission may direct. So वो जो challenge to the complaints and all है उसके context में मैंने ये निशानदेही की है कि ये provisions भी exist करती हैं। The commission is not wholly deprived of power and authority. It is an independent body as the court has observed and it needs to be empowered. Thank you. Thank you. किधर है? जी सर, आई एम इन्फॉर्म कि पहले चिराग होता था बैट से। पहले चिराग होता था सिंबल बैट से पहले। किसका? 2002 में पीटीआई का सिंबल की जो बात हो रही है। ओके। जनाब ने एक सवाल पूछा था क्योंकि और सिंबल तो नहीं था तो उसका मुझे उन्होंने बताया कि चिराग था। तो he's earned his keep. Always more than grateful. Thank you. Anything, my lord? You just want to right of reply is restricted to the points other side is raised. Including the reasons assigned by the bishop. My lord, that would be my main burden because that has been the main plank of the argument of the other side. My lord, very, very briefly, may I just hand over a few notes of chronology first. My lord, this is a chronology which is just being given. This is just to save your lordship's time. साहब को भी दीजिए। जी, I will not read it. This just gives my lord the event and the timeline and the page number to facilitate your lordships. अच्छा, एक इनका ये पॉइंट है कि आप डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर रहे हैं, किसी को आप फाइन लगा रहे हैं, किसी को कह रहे हैं बाद में इलेक्शन कर दो कि और सिर्फ इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। ये पॉइंट पहले आप एड्रेस कर लें। My lord, with your lordship's leave, as of yesterday, the enlistment of about 13 political parties. 13 or 30? 13. जी। They have been. आज कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में? वो मैं आपको चेक करके बताता हूँ, but 13. वन सबूत है 13 की। 13 का सर, there is an order. 13 का। एक तो हमने खुद देखा था ऑल मुस्लिम लीग वाला जो था, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग। Just place a copy of the order before your lordship. They are all being done by one order or 13 order? By one order. ये ऑर्डर हमें दिखा दें। जी सर। So 13 plus 1, all Pakistan Muslim League was separate to this, so it is included in the 13. My lord, this is not a case of all Pakistan Muslim League. वो तो हमें पता है क्योंकि वो हमने खुद ही लिखा है परसों। इसी लिखा। Sorry, this is 12 plus 1 is that. These are the 12 parties. Your lordship will see they're all listed on page 1. Page 1? The very first page. This is the order dated. तो किसी का नजर नहीं आ रहा है मुझे। If your lordship will see after the name of the parties, your lordship will see on commission's notice, Dr. Paul Jacob Bhatti, President Chairperson, All Pakistan. कुछ और आपने हमें दे दिया, इस पे कहाँ लिखा है ये बातें? ये क्या दिया है? ये किस चीज, ये ऑर्डर की बात कर रहे हैं? जी सर, they order dated 4th of January 2024. इधर कितने पार्टीज के नाम? Sir, if your lordship see the heading on commission's notice, and then your lordship will see serial number 1 to 12. अच्छा नहीं ये अच्छा अभी ये कुछ और दिया था। अच्छा ये वाला है। अच्छा ओके, गॉट इट। ऑल पाकिस्तान तहरीक, अवामी पार्टी, भावलपुर नेशनल पार्टी, सबका पाकिस्तान पार्टी, इनको आपने उड़ा दिया है। Yes, the discussion is in paragraph 24.
नहीं ठीक है, वो हम ऑर्डर वो हम नहीं देखना चाहते क्योंकि कल को हो सकता है हमारे सामने चैलेंज हो जाए। जी सर। हम सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि आपने वो क्या उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट तो नहीं किया है। जी, एनपी को प्रॉब्लम की जो डिटेल जजमेंट हमें प्रोवाइड की गई बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन केपी, द टाइम वाज एक्सटेंडेड अप टू 10th of May of this year. उन्होंने रेफरेंस के लिए दे दिए हमें अभी जजमेंट। अवामी नेशनल पार्टी को आपने टाइम दे दिया कि इलेक्शन बाद में करा लो। Sir, that order I've also just taken a look at. It was handed over, a copy was handed over to me. In that particular case, the outer limit of the statute to hold elections is 5 years. Those 5 years had not expired in their case, and they wanted an extension. अच्छा, उनका 5 साल नहीं हुए थे? 5 साल जो सर स्टैट्यूट में आउटर लिमिट है वो 5 साल नहीं हुए थे, उस 5 साल के अंदर अंदर की उनको एक्सटेंशन दी गई। कॉपी दे दूंगा। अच्छा, ओके ठीक है, गॉट इट माय लॉर्ड। Okay, what else do you want to say? My lord, a preliminary objection was raised by one of the learned counsel. Maintainability. Our respectful submission is that if this objection, first your lordship may see, file Election Commission, please order it. If that in a number of cases the Election Commission has come before this honorable court, and we have prepared the list to show recently the number of cases which I have to move everything. The Election Commission has come before this honorable court, and this honorable court has dealt with their matters. Your lordships saw that this has been happening way back since the case of Javed Hashmi. And your lordship will see these are all petitions of 2023 and 2022 which have been disposed of by your lordships. Election Commission's petitions have been entertained under Article 185. 2 quick points on that. These are not reported judgments. No, my lords, insofar as we are aware, they are not. पर आपने एक reported judgment भी तो दिया था। जी सर, दो दिए थे। कल दिए थे ना आपने? जी सर। वो तो लगे हुए हैं आपकी बुक में। जी सर। हाँ। वो भी लगे हुए हैं, 2 अनरिपोर्टेड भी दिए थे, वो अलग से दिए थे, जिसमें से एक इसी बेंच का जजमेंट है सर। The short point to be made in that respect is that this would mean, if this interpretation is accepted, it would mean that any declaration by the High Court with respect to the powers of the ECP would virtually be the final, and this honorable court would have no jurisdiction under Article 185. I'm not really persuaded by that argument, so you want to move on to something. My lord, I will immediately then move on to the next one. The next argument was made with reference to the Tirmizi case. Our respectful submission is we had read out that passage of the judgment before your lordship. I need not read it again. That's in the bundle. They relied on Tirmizi. My lord, they have said that there is, once they had gone to Peshawar High Court, they did not have to go to Peshawar High Court again because the second order was a new cause of action which gave them the right to go to any court. Our submission based on Tirmizi is that in Tirmizi, this honorable court was dealing also with 2 orders, and this honorable court held that generally the principle of concurrent jurisdiction applied, but where you had You read out that portion. Yes, my lord. The citation की दोबारा बता दें. Yes, sir. This is, my lord, PLD 2008 Supreme Court 735. It is in volume 1 of your lordship's bundle. And relevant page was? Relevant page was, my lord, 760 to 761. ठीक है, and this is by what? How many judges? My lord, this is by 5 judges of this honorable court. PLD is a citation? PLD 2008 Supreme Court 735. At 760 and 1. The relevant 760, 761. This is tab number 6 of volume 1 of the bundle that I handed over, and the relevant portion is highlighted. My lord, from that, and we rely on that, and that's it, the rule of propriety applies, and therefore the High Court should not have gone into this matter without first attending to it
and dealing with it. My lord, from there, we immediately, I have already given your lordship a chronology. We immediately move to the What is the significance of the chronology? My lord, the chronology is just to facilitate your lordships to show what event took place on what date and where it is mentioned in these 3 paper books of your lordship. So that's just a facilitation. Agar if you don't agree with any item here, please let us know. ये जो दिया है document, जी, we have given वो mark कर दीजिएगा. I don't agree. जी. So this is the chronology. My lord, insofar as the judgment of the Peshawar High Court is concerned, the argument now gets focused. Now we know the reasons. Yes, my lord. Your Do lordship you want knows to the launch reason. an attack or you withdrawing the attack? No, my lord, my submission is based on this, that the submissions which your lordship have heard, in order to save your lordship's time, the portions that I am going to identify, I have already highlighted in yellow in this photocopy of the judgment and placed before your lordship. The controversy significantly narrows down. If your lordship will see, the findings of the court are there from page 6 onwards. If your lordship turns to page 7, at paragraph 9, the learned division bench of the High Court reproduces the facts in one paragraph, and paragraph 10 is important. The lordship said the petitioners have questioned the impugned orders on legal as well as factual premise. Page 7, my lord. The portions are highlighted. The facts are in paragraph 9. The finding is in paragraph 10. And I just read out the highlighted portion in paragraph 10. We've read it. What do you want to say? My lord, I want to say that the High Court is saying that if so far as the facts before the commission are concerned, we will not go into that facts. So if ECP had jurisdiction in the matter, then we had no mandate to interfere in the said findings. So they are saying we'll accept the findings of fact as they are. We will not interfere. मुझे थोड़ा contradictory लग रहा है. My lord, is it my imagination or what is it? My lord, in a sense it is, and I'll show to your lordship in a moment why it is, but may I say what they're saying over here? They are not engaging with any of the facts which were stated in the impugned order on the basis of which it was declared that they are not eligible to assemble. The High